morning, students. Today I shall start the third part of this Debye Huckel theory for electrolytes. Already I have delivered 2 lectures on this topic, and this third one is for Debye Huckel limiting law. This is the part of the Debye Huckel theory, and the equations which are used here is also from those topics which I have discussed earlier. So I will take the help of the equations derived on previous classes. So this is also one of the equation from where we shall start, and that is equation 11, which I have already discussed in my previous class, and that is K is equal to this one. K is the 1 by K is the Debye length, which I have already discussed, and K is equal to under root 4 pi epsilon square summation Ni Zi square divided by dkt. Here these two are different. This K is the Boltzmann constant, where this K is in terms of 1 by K, or 1 by K is Debye length. Now Ni is equal to number of ions per cc, and Ni is equal to Cin divided by 1000, where N is the Avogadro's number. This is already discussed in previous class, and K is equal to Boltzmann constant. So if we put these values in this equation for K is equal to R by N, and this Ni is equal to Cini by 1000, then we get this type of equation. This equation converts into this form, and if we take or simplify this equation for some terms, this 4 becomes 2, n square becomes n, and epsilon square becomes epsilon when it is taken out of the root. Now putting this value in equation 25. What is equation 25? So we have already discussed it in my previous lecture. This is equation 25. Minus ln fi is equal to n Zi square epsilon square K divided by 2d RT. So in this equation, if we put the value of K, which have already discussed, so now it becomes this one. Only we have put the value of K. This K value has been put 2n epsilon under root pi by 1000 summation Ci Zi square divided by R dt, and rest part is same. This rest part is same. This is the rest part of equation 25. Rest part of equation 25 is same, only we have put the value of K, this one. And now if we simplify this equation, then we get this type of equation where Fi is the activity coefficient, and on simplification we will finally get this type of equation, equation 26. Now one thing that is very important, which is used as an important term, and that is ionic strength, denoted by mu. So mu is equal to ionic strength, and the formula of mu is equal to half summation Ci Zi square. So summation Ci Zi square is equal to 2 into mu. So 2 mu is equal to Ci Zi square, and if we take root of this, summation Ci Zi square is equal to under root 2 and mu. So here it is mu, 2 is out of this square root, and it is combined with constant a. So if we put these values here and simplify it, we get equation 27 minus log 10 Fi is equal to a into Zi square under root mu, where root mu, 2 root mu is equal to Ci Zi square. So for this term we will write under root 2 mu. Root 2 is separated from this root mu, and it is combined
in this term and whole is equal to A. Now A is equal to a constant and the value of A is this one. A is a constant for a solvent at a specific temperature, and also D is equal to dielectric constant and is constant for any particular solvent. Dielectric constant is constant for any particular solvent. Equation 26 is known as Debye Huckel limiting law. What is equation 26? This one. This equation is actually called as Debye Huckel limiting law. So equation 26 is known as Debye Huckel limiting law, and the Debye Huckel limiting law 26 explains the variation of activity coefficient of an ion with the ionic strength mu of the medium. So equation 26 is this one. Here it is also 26. Equation 26. And what I have written, the equation 26 explains the variation of the activity coefficient of an ion with the ionic strength mu of the medium. So this equation 26 relates this activity coefficient. This is the activity coefficient, and here it is the ionic strength. So what I have written, the 26 explains the variation of activity coefficient of an ion with the ionic strength. This is called as limiting law also because, why it is called limiting law? Because of the approximation made in the derivation of the potential of an ion due to its ionic atmosphere justifiable only at infinite dilution is approached. हम लोग जब इसका डेरिवेशन करते हैं तो उस समय ये हम लोग मान करके चलते हैं कि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब अप्रोच करेगा तो ये कंडीशन हम लोग लगाते हैं, और इसीलिए ये जो लॉ है इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग लॉ, और इसलिए ये डिबाय हक्कल लिमिटिंग लॉ के नाम से जाना जाता है. ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 26 which is this one, minus log to the base 10 fi is equal to a zi square under root mu, it follows that activity coefficient of ion, activity coefficient of ion should decrease with increasing ionic strength, because this fi, which is activity coefficient, it is directly proportional to the ionic strength but with a negative sign. Therefore, if it increases, this value will decrease, and hence we can say it follows that activity coefficient of ion should decrease with the increasing ionic strength of the solution. Now there are some limitations also. Equation 26 cannot be tested in this form because there does not appear to be any experimental method of evaluating the activity coefficient of a single ionic species. ऐसा कोई मेथड हमारे पास नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है जिससे कि हम एक सिंगल आयन के चलते जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा उसको हम लोग टेस्ट कर सकें. Tested in this form because there does not appear any experimental method of evaluating the activity coefficient of a single ionic species. So what we do, तो हमारे पास क्या रास्ता रहता है, तो एक और टर्म हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं मीन एक्टिविटी और मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. So it is possible to relate individual ion activity to the measurable mean activity of the ion. इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मीन एक्टिविटी है उसको हम लोग जो है सो निकालते हैं. एक से ज्यादा आयन है तो उनके लिए जो है सो हम लोग मीन जो है सो निकालते हैं और वो मीन एक्टिविटी कहलाता है, और मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट. नाउ इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए बाइनरी electrolyte dissociates into new ions, this is the number of which mu plus and mu minus are the cations and anions, जिसमें कि ये cation बनता है और एक anion बनता है, इतना संख्या में बनता है, then the mean activity coefficient which is represented by this notation F plus minus is related to the individual ionic activity coefficient F plus and F minus by this relation. This is the mean activity coefficient and this is the activity coefficient of cation, this is the activity coefficient of anion, और ये जो न्यू है वो कितना संख्या में है. अगर उनकी संख्या 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, अगर 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, अगर 4 है तो ये 4 यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा.
नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम लोग अगर लॉग लेते हैं तो लॉग के रूल के अनुसार अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है इसका पावर अगर 2 है बाइनरी के लिए, बाइनरी के लिए इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, लेकिन अगर ये न्यू लिखा हुआ है तो यहाँ न्यू होगा। तो लॉग के लिए ये टर्म पहले आ गया, उसके बाद फिर हम लोग जो है इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा टर्म आएगा, और फिर जो हमने लिखा है कि ये न्यू है तो इसको फिर हम लोग न्यू प्लस और न्यू माइनस में इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि ये मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट हो। If Z plus and Z minus are the valencies of the cations and anions respectively, then this mean activity coefficient will be equal to this one. Inserting the value of log Fi मतलब जो activity coefficient है for plus and positive and negative ions, equation 26 becomes this one. Equation 26 becomes this one. क्योंकि equation 26 हमारा यहाँ इस तरह से था, equation 26 जो है वो हमारा ऐसा था, तो इसके जगह पर हम लोग जो है जेड आई स्क्वायर जो लिखे हैं वो हम लोग जो है वो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे जेड प्लस एंड जेड माइनस अंडर रूट मीन। इक्वेशन 27 is known as Debye Huckel limiting law for the mean activity coefficient of an electrolyte applicable to the dilute solution whose ions have valencies Z plus and Z minus respectively। मतलब कटायन का एक ये वैलेंसी है और ये अनायन का वैलेंसी है, और एक्टिविटी कोएफिशिएंट मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट के लिए हम लोग फिर ऐसा जो इक्वेशन लिखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द Debye Huckel limiting law, the departure from the ideal behavior in a given solvent is governed by the ionic strength of the medium and the valency of the ions of the electrolyte, but is independent of chemical nature। ये हम लोगों को ये इक्वेशन 27 से ये कंक्लूजन या ये निष्कर्ष निकल रहा है कि यहाँ पर हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसका केमिकल नेचर क्या है, उस पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, उस पर कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ उसका कोई टर्म नहीं है। तो टर्म कौन कौन से हैं, ये उसके या तो वैलेंसी है या फिर आयनिक स्ट्रेंथ है। इसीलिए ये लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द Debye Huckel limiting law, the departure from the ideal behavior in a given solvent is governed by the ionic strength of the medium। एक और दूसरी बात पर किस पर डिपेंड करेगा, एंड द वैलेंसी ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर केमिकल नेचर। नाउ द टेस्ट ऑफ Debye Huckel थ्योरी। अब Debye Huckel थ्योरी को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, उसके टेस्ट अगर हम लोग कर लें तो ये पता चलेगा कि हाँ जो हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया है या इक्वेशन जो डिराइव इस तरह से किया जाता है वो करेक्ट है। तो पहला जो टेस्ट है कि 1921 Lewis and Rendell gave an empirical rule according to which the mean activity coefficient in dilute solution is the same in the solution of the same ionic strength। अगर आयनिक स्ट्रेंथ हम लोग सेम रखें अलग अलग सॉल्यूशन में तो जो मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट के वैल्यू जो होंगे वो जो है सो सेम मिलेगा। ये 1921 में लेविस और रेंडल ने एक एम्पिरिकल रूल निकाल करके फैक्ट को एस्टैब्लिश किया था, और इक्वेशन 27 इज इन एग्रीमेंट विद द अबव एम्पिरिकल रूल। और इक्वेशन अभी जो 27 हम लोगों ने जो देखा वो उसका जो रिजल्ट है और ये लेविस एंड रेंडल का जो एम्पिरिकल रूल का जो रिजल्ट था वो दोनों सेम होते हैं। दूसरा टेस्ट जो है वो इस तरह से है कि जो इक्वेशन 27 है जो हम लोग माइनस लॉग एफ प्लस माइनस जो कि मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट के लिए लिख रहे हैं, अगर इसको हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं अगेंस्ट अंडर रूट म्यू आयनिक स्ट्रेंथ में के साथ में फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन स्ट्रेट लाइन शुड पास थ्रू द ओरिजिन एज शोन इन द फिगर। जो फिगर हम लोग जो दिखा रहे हैं विद द स्लोप दिस वन, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में है। हमारा जो इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में है और x के जगह पर ये अंडर रूट म्यू है और y के जगह पर माइनस लॉग f प्लस माइनस ऐसा है, और ये m के जगह पर हमारा ये a इंटू z प्लस एंड z माइनस है, z प्लस एंड z minus। So this is the slope, this is the x-axis, x coordinate, this is y coordinate, and finally we will get the graph like this. We will get the graph like this. Root mu is on x-axis, minus log f plus minus in the y-axis, and this is for univalent electrolyte.
this is for unibivalent electrolyte, this is for unitrivalent electrolyte. And third test is, what is that test? Different workers determine activity coefficient of univalent electrolyte, मतलब ये जो नीचे वाला जो कार्य है उसके लिए, by various methods and found that activity coefficient are the functions of the square root of the concentration. जो मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो थे वो अब किसके यूनिवैलेंट के लिए जब हम लोग करेंगे तो किसका फंक्शन होगा, तो कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो हमने ये जो लिखा है, ये जो रूट न्यू लिखा है वो जो है सो रूट सी के बराबर होगा, क्योंकि ये आयनिक स्ट्रेंथ जो होता है न्यू इज इक्वल टू हाफ समेशन सी आई जेड आई स्क्वायर होगा। तो यदि z इज इक्वल टू जेड आई इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो ये म्यू इज इक्वल टू हाफ सी आई हो जाएगा, और ये जो रूट म्यू है वो रूट जो है सो कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। फॉर सच सब्सटेंस आयनिक स्ट्रेंथ आर इक्वल टू द कंसंट्रेशन, द रिजल्ट्स आर इन हार्मोनी विद इक्वेशन 27। और इस तरह से जो 27 हमारा जो इक्वेशन है वो उसके मैच कर जाता है उसके रिजल्ट से। दिस इज इक्वेशन 27। टेस्ट है वो दोनों इक्वल हो जाता है कि ये रूट न्यू और जो रूट कंसंट्रेशन है उसके सेम होते हैं। थैंक यू वेरी मच।